Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hoping all of you are fine and enjoying at home. Well, beta, as you know that we have started our online classes for all your subjects for FSC Part 2. So, I am talking about English. So, we have started our very first lesson from book 2, that is The Dying Sun. So, let us start it. Actually, we had covered almost 3 paragraphs from this first lesson yesterday, and the rest of the lesson is going to be completed inshallah today. And first of all, let's have a review or a sort of flashback regarding what did we study yesterday. Well, in the very last paragraph, we just talked about the planetary system, the solar system, or the creation of this universe, or the creation of the planetary system. Well, all this happened, by accident or accidentally, that a star wandering blindly through the space happened to throw its rays on the surface of the sun, thus forming a very huge mountain. And when the star receded or moved back, so out of its gravitational pull, the high mountain ultimately broke into pieces, and all these pieces scattered into the space. These are small and big in size, and they are our planets. They make our planetary system. Well, beta, when we read this lesson, certain questions arise, certain questions appear, certain questions pop up in our mind. Like, we might be having a question like, what is the difference between the stars and the planets? Well, the stars are the bodies in space which are having their own light, their own energy, their own heat, whereas we see that the planets are the small bodies which are detached from a star. So, that is why, because they are not having a light, energy or heat of their own, so these planets entirely depend on that particular star for its heat, energy and light. ठीक है जी, ये डिफरेंस हो गया स्टार्स और प्लैनेट के दरमियान. एक और क्वेश्चन जो कि आपके जहन में आ सकता है वो ये है कि व्हाट इज स्पेस. वेल बेटा, स्पेस मीन्स द यूनिवर्स आउटसाइड द अर्थ's atmosphere. All the heavenly bodies, moon and stars exist in space, and we see that it is all the surrounding vacuums which is having immeasurable distances, and the space is limitless, and we also know that it has the cold of hundreds of thousands of degrees of frost. So, that is why life cannot exist in space, rather it would be frozen. Similarly, another question you people might be having in your mind is that, is the sun a star or not? Yes, literally the sun is a bright star, like billions of trillions of stars which we see in the sky. Well, the sun is the basic source of energy, heat and light for us, and it supports all life on the planet Earth. We see that there are certain calculations by scientists regarding the sun. Sun basically, we just come to know, let's have a look at this board to know what do the scientists say. Actually, as a matter of fact, the scientists let us know about the temperature inside the sun's core and as well as on the sun's surface. See, scientists have calculated that it is about 27 million degree Fahrenheit inside the sun's core, whereas more than 9,000 degrees Fahrenheit on its surface. It means it's too much heat on the on the sun and too much temperature that life cannot exist on it. We see that we are 93 million miles away from the sun. So, we get right amount of warmth, right amount of heat from it because of being at a certain distance from the sun. जी बेटे, आज let us start our today's lessons, the next paragraphs. That is the fourth one. Fourth paragraph में देखते हैं कि आज जो है वो क्या पढ़ा जाएगा.
The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. Extremely means intensely, too much, exceedingly, बहुत ज़्यादा हद तक। तो क्या हमें क्या मालूमात जो है आज के लेसन से मिल रही हैं कि द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, कि सूरज बजाते खुद और जितने भी सितारे आसमान पे दिखाई देते हैं बहुत गर्म है, इंतहाई गर्म है, गर्म तरीन है। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। एग्जिस्ट मीन टू बी प्रेजेंट, मौजूद होना, यानी ये सितारे और सूरज इस कदर गर्म है कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देम। तो वाई डज लाइफ नॉट एग्जिस्ट on the sun or other stars? Then we get the answer of these questions right in these beginning lines of this paragraph. हमें बता दिया गया है कि stars and suns are far too hot for life to exist on them. बेहद गर्म है, लिहाजा वहाँ ज़िंदगी का ज़हूर जो है मुमकिन नहीं है, बल्कि क्या होगा, all life would burnt up, would be burnt up, ज़िंदगी यहाँ पर भस्म हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर है। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. और जब हम उन पीसीस की बात करते हैं, जब एक माउंटेन जो है वो सन सरफेस पे बस्ट होता है और इसके पीसीस स्कैटर्ड हो जाते हैं और इन्हें प्लैनेट का नाम दिया जाता है, और ऑल दिस प्लैनेट्स आर बेसिकली इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स, दे आर रिवॉल्विंग राउंड द सन। और क्या हुआ कि इनिशियली ऑल दीज पीसीस वर very hot indeed because they got scattered from the sun itself. ये सूरज का हिस्सा थे, उससे जुदा हुए, तो इब्तदा में ये सैयारे बेहद गर्म थे। Gradually they became cooler until now they, gradually means with the passage of time, slowly they became cooler. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ जी, ये सैयारे, ये टुकड़े जो कि सूरज से जुदा हुए थे एक माउंटेन फटने की सूरत में, ये आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ते चले गए। Until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation. Entirely mean completely, thoroughly. Radiations mean rays which the sun pours down, raises, throws on them. तो अब क्या है कि with the passage of time these planets, these species started cooling down. ये आहिस्ता आहिस्ता कूलर होते चले गए, ठंडे तरीन होते चले गए, यहाँ तक कि right now we see that they are having a very little heat of their own, and whatever warmth and heat we find on our planet Earth, it is all due to the radiation or the rays which the sun throws on our planet. और अब जो warmth, जो हरारत है, उसका मंबा क्या है, उसका सोर्स क्या है इस कुर्रे ज़मीन पर, वो है सूरज। तमाम तर तवानाई, तमाम तर हरारत, तमाम तर रोशनी का मंबा, तमाम तर ज़िंदगी का दारोमदार जो है और इसका मरकज़ जो है वो कौन है, सूरज है। और क्योंकि सूरज की वो शुआएं जो वो प्लैनेट अर्थ पे फेंक रहा है, उससे हमें ये वार्मथ, एनर्जी और लाइट जो है वे मिल रही है। In the course of time means with the passage of time. Actually, I have written down the difficult meanings of this lesson from all the paragraphs right on the board, so you can have a look on it at the same time as well. In course of time, with the passage of time, one of these cooling pieces gave birth to life. And here we come to know that how did the life begin? How did the life come into existence on this planet Earth? We see that when the planet Earth became cooler, or when gradually it lost its heat, so what happened? That the life gradually started to appear on the surface of, on the planet Earth. It gave birth to living beings. We do not know how, when or why this happened. The writer himself is not having any solid idea. He is not having any solid proof regarding when, how and where all this or why all this started. ये सब
कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, इस बारे में ऑथर हमें कोई एग्जैक्ट श्योरिटी के साथ कोई आइडिया प्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी स्पेकुलेशंस क्या हैं। वो कहता है कि इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मीन वेरी टाइनी लिविंग बींग्स, वेरी टाइनी लिविंग क्रीचर्स, जिंदा नामियाती अजसाम या वजूद। तो ज़िंदगी का आगाज़, ज़िंदगी का जो इसकी जो इमर्जेंस थी, इसकी जो अपीयरेंस है, वो हमें कैसे नज़र आती है। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स इन वेरी टाइनी क्रीचर्स, नन्हे नन्हे नामियाती ज़िंदा अजसाम की सूरत में हमें ज़िंदगी का ज़हूर जो है वो कुरे अर्ज़ पर दिखाई देता है। होज़ लिविंग पावर कंसिस्टेड मीन कंप्राइज्ड, मुश्तमिल होना, chiefly mean basically in their being able to reproduce themselves before dying. तो what was the quality, what was the characteristic of these living beings? ये जो living beings थे, जो वजूद में आना शुरू हो चुके थे, जो ज़हूर पजीर हो चुके थे, उनकी एक खूबी क्या थी कि they were chiefly mainly able to reproduce themselves थ्रू नेक्स्ट जनरेशन बिफोर डाइंग, कि वो मरने से पहले अपनी जैसी एक नस्ल जो है उसको कुरे अर्ज़ पर लाने का सबब बनते थे। ठीक है जी। तो these creatures were able enough to reproduce themselves before their death, before dying. But from these humble beginnings, humble mean very common, very ordinary, very simple. Beginnings mean start, came a stream of life. Stream of life stand for continuity of life, फ्लो ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक बहाव, ज़िंदगी का एक तसलसल। और इस टाइनी क्रीचर के साथ हमें नेक्स्ट चीज़ें क्या नज़र आती हैं कि ज़िंदगी का एक तसलसल, ना ख़त्म होने वाला एक सैलाब हमें नज़र आता है। ज़िंदगी जो है वो मज़ीद जो है वो हमें मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रही है। ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन कॉम्प्लिकेटेड, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम द लाइफ grew more and more complex. It became rather more complicated. ज़िंदगी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करती चली गई। Has in the end produced beings whose lives are largely centered in, largely mean to a greater extent, centered in means focused on, in their feelings and ambitions. Ambitions mean aims, objectives. Their sense of beauty mean aestheticism. Aesthetic sense means love of beauty. And the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. So when gradually life became or grew more and more complex, more and more complicated, so we see there appeared a human being on the face of the अर्थ। ह्यूमन बीइंग जो है जैसे जैसे लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स होती चली गई, पेचीदगी इख्तियार करती गई। वो कहा जाता है ना कि इब्तदा में जो है एक दौर ऐसा भी था कि दुनिया में डायनासोर थे, मुख्तलिफ़ किस्म के रेप्टाइल्स थे, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स जो थे। वो इब्तदाई ज़माना, इब्तदाई आफरीनिश का इंसान, जब इंसान जो है वो इंसान से भी पहले ये सब चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आईं और फिर क़यामत सुग़रा बर्पा हुई और ये सब चीज़ें जो है वो ज़मीन के नीचे जो है वो सब चली गई, फोसिल्स बन गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो पानी में देखें आप मछलियाँ और बाकी और जो एक्वेटिक लाइफ है उसका ज़हूर नज़र आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जंगलात में हमें मुख्तलिफ़ जानवर, परिंदे, इनके आगाज़ के हवाले से जो है वो बताया जाता है। और फिर लाइफ जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स होती चली गई, तो आखिर में हज़रत इंसान वो हस्ती वजूद में आई जिसे इंसान कहा जाता है। और इंसान के बारे में यहाँ क्या लिखा है कि मैन इज़ द क्रीचर who is having his own ambitions, having his own aspirations, he is having his own emotions. He is connected with the religions in which lie all his desires and high ideals or hopes of life. And man is a creature who is bestowed with aestheticism. He is having a high order, a sense of beauty of high order. यानी हज़रत इंसान जो है वो एक ऐसी क्रीचर है
which is called the supreme creature of Allah Almighty, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। और हज़रत इंसान जो है अल्लाह ताला ने उसे विस्डम, अक़ल अता की, उसको परसेप्शन अता किया, उसको विजन अता किया। इंसान अपने इमोशंस रखता है, फीलिंग्स रखता है, अपनी ख्वाहिशात, अपने नस्बुलैन, अपने इरादे और एक अपने मज़ाहिब रखता है, जिससे उसकी वाबस्तगी जो है, दिली वाबस्तगी एक फितरी फिनोमिना है। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो आप क्या देखते हैं इसमें, हमें क्या बताया जा रहा है कि वी कैनॉट से एग्जैक्टली दैट हाउ, व्हेन एंड व्हाई लाइफ स्टार्टेड ऑन द प्लैनेट अर्थ। इट माइट हैव स्टार्टेड इन लिटिल और tiny living beings who were able to reproduce themselves before dying, and with the passage of time the life grew complex and in the end we see human beings। तो ये बेटा इसके आंसर में आपको यहाँ से ये जवाब जो है वो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। फिर बेटा इसमें वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ एंड दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें ह्यूमन बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। आपको बताया गया है कि मैन इज़ बीइंग द सुप्रीम क्रीचर, द मैन इज़ बिस्टोर्ड विद फीलिंग्स, इमोशंस, हाई आइडियाज़, noble ideals and a sort of high class or a marvelous sense of beauty or a sense of aestheticism। तो ये these are the basic characteristics of human beings। ठीक है बेटे, ये आपने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट लेसन में देखते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पे नई चीज़ें जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बेटा इस पेज में हमें ये बताया जाएगा कि वाई इज़ दिस यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। ये यूनिवर्स जो है इतनी फ्राइटनिंग क्यों है, हम इससे खौफजदा क्यों होते हैं। वाई डू वी फील फियर व्हेन वी कास्ट अ ग्लैंस ऑन दिस यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to define कि what is universe। universe क्या है? all the existing matter and space is considered as a whole the cosmos or the universe, and there is a vast number of galaxies to be seen in this universe, and we see that the universe has been facing changes, it has been expanding since the time of its creation with Big Bang some 13 billion years ago। तो यूनिवर्स और कॉस्मोस क्या है, ये कंप्राइज कर रही है आपकी स्पेस को और तमाम मैटर जो इसमें मौजूद नज़र आता है। यूनिवर्स में हमें स्टार्स भी नज़र आते हैं, गैलेक्सीज नज़र आती हैं, हमें सन, मून और अदर हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो दिखाई देते हैं। When talking about the history of the universe, we cannot exactly tell about its creation। हम इसकी क्रिएशन के बारे में नहीं बता सकते। We cannot say rightly that how long ago the universe has existed। कि यूनिवर्स जो है उसका ज़हूर जो है, इब्तदा जो है वो कब हुई, इसके बारे में बताना मुश्किल है। इसके बारे में कोई हमें एग्जैक्ट आगाही नहीं मिलती है। जी बेटा, अब आते हैं इस पैराग्राफ की तरफ। Although we cannot speak with any certainty, certainty means surety। certainty means surety, यकीन के साथ कोई बात कहना। Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human life came into existence in some such a way as this। तो क्या है कि we are not sure about how actually the life started on this planet Earth, but it might have started in some such way as has been indicated by the author, by the writer of this piece of writing। Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time। So this planet Earth is rightly called as a part of a grain of sand, or a grain of sand on all the a part of the grain of sand
which is to be seen on all the seashores of the world. तो जब हम इस लिटिल प्लैनेट अर्थ पे खड़े होकर इसके बारे में सोचते हैं, और when we see in our surroundings and when we see the surrounding vacuum, तो certain questions appear in our mind. तो हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आते हैं, and sometimes we feel frightened to see that the life exists only on a very little portion in this universe, and the rest of the universe is without any living creature, living being. हमें पूरी कायनात में ज़िंदगी का कोई किरदार, कोई अमल दखल दिखाई नहीं देता। जब हम ज़मीन पर इस हवाले से सोचते हैं कि ये कुर्रा अर्ज़ जो कि रेत के दुनिया के तमाम साले समंदर पर मौजूद जो रेत के ज़र्रात हैं उनमें से एक किसी रेत के ज़र्रे का भी लाखवां हिस्सा है, तो यहाँ ज़िंदगी जो है वो मौजूद है। जब ये क्वेश्चन जहन में पैदा होता है तो ये चीज़ें हमें खौफज़दा कर देती हैं कि ज़िंदगी में ज़िंदगी का इस किसी प्लैनेट पे, यूनिवर्स में किसी जगह पर भी हमें ज़िंदगी का ज़हूर दिखाई नहीं देता है। तो ये यहाँ पर एक बहुत अहम क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ के स्टार्ट में ही मिल जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज दिस यूनिवर्स फ्राइटन अस, कि ये कायनात जो है हमें क्यों खौफज़दा कर देती है, ये कायनात हमें क्यों डराती है, ये कायनात हमें क्यों एक खौफ की कैफियत में ले आती है, उसकी रीजंस क्या हैं उसको अभी हम पढ़ लेते हैं। आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर। जब हम अगेन द सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड दैट आवर वेरी फीलिंग इज़ लाइक दैट ऑफ फियर। हमारी फीलिंग जो है वो फियर को बेस कर रही है जब हम अपने आसपास कायनात में, इस कॉस्मोस में मुख्तलिफ़ चीज़ों पर निगाह डालते हैं, मुख्तलिफ़ हेवनली बॉडीज़ को देखते हैं और लाइफ को नॉन एग्जिस्टेंट पाते हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस ना सिर्फ हमारे जहन में आते हैं बल्कि बहुत सी चीज़ें हमें खौफज़दा करने का बाइस भी बनती हैं। We find the universe frightening. Frightening means horrifying. The thing which makes us feel having some sort of fear. खौफज़दा करना. We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand. So there are the distances of billions or millions of miles between stars and between the stars and the heavenly bodies. This feeling make us horrify. हमें ये एहसास खौफज़दा कर देता है कि इस कॉस्मोस, इस यूनिवर्स में फासले लामतनाही हैं जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। दीज आर इममेजरेबल डिस्टेंसेस टू बी सीन इन आवर यूनिवर्स। तो ये चीज़ें हमें हॉरीफाई कर देती हैं कि हम इन डिस्टेंसेस को माप नहीं सकते, इन डिस्टेंसेस की पैमाइश नहीं कर सकते, और जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फासले हैं, उनकी मेजरमेंट जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ें हमें खौफज़दा कर देती हैं कि कायनात किस कदर वसी है, किस कदर वसी व अरीज़ है कि इसके फासले मापना नामुमकिन है, मुहाल है। Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. Stretches mean expenses, खला की वसअतें। एक और चीज़ जो कि हमें खौफज़दा कर देती है, जो हमें हॉरीफाई कर देती है, वो ये है, well beta, we find this universe frightening because of its immense distances. इसमें जो लंबे नाकाबिले पैमाइश फासले हैं, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइल्स, ट्रिलियंस ऑफ माइल्स का एक फासला है सितारों और हेवनली बॉडीज़ में, ये सब चीज़ें हमें हॉरीफाई कर देती हैं। दीज आर द थिंग्स विच वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, वी आर अनएबल टू विजुअलाइज, वी आर अनएबल टू इमेजिन। Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. And when we talk about the concept of time in space, तो हमें ये महसूस होता है जब हम वक्त के मफरूज़े को सामने रखते हैं, इस पूरी कायनात जिसके बारे में हम वसूख से नहीं कह सकते कि इसने कब ये ज़हूर पाया, इसकी इब्तदा कब हुई, जब हम यहाँ पर टाइम कंसेप्ट के हवाले से सोचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम जो वक्त की सिमतें हैं या वक्त की जो वजाहतें हैं उसको हम समझने से कासिर हैं, टाइम कंसेप्ट को हम समझने से कासिर हैं। आप देखिए, हम पूरे अर्ज़ पर हमारा दिन बनता है, दिन और रात,
24 आवर्स को कंप्राइज कर रहा है आपका पूरा ये ड्यूरेशन, डे एंड नाइट। और सूरज जो है वो कहीं गरूब नहीं हो रहा, यानी सूरज जो है वो जब रोटेशन में है, आपकी अर्थ जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है, रोटेशन में है, और वो अपने सोलर सिस्टम का ये प्लैनेट एक हिस्सा है चूँकि, और ये अपने मिदार में घूमते हुए जब सूरज जो है वो हम गरूब महसूस करते हैं कि गरूब हो चुका है, सनसेट है, तो एक्चुअली पूरा अर्थ में घूमते हुए कहीं और अपीयर हो चुका हुआ है। ठीक है, वहाँ दिन हो गया और जिस हिस्से में हम मौजूद हैं वहाँ रात हो गई। तो ये हमारा जो वक्त का तयन जो है वो दिन और रात का ये तसलसल और ये एक दायराकार जो है, जो एक अमल है, इससे दिन और रात की वजाहत बन रही है। जबकि यूनिवर्स में मौजूद जो टाइम कॉन्सेप्ट है, हम उसको समझने से हमारी अकल जो है वो कासिर है, हमारी अकल इससे मावरा है, making the whole human history so very small in comparison. Yani when we compare the whole human history, which might be of a few thousand years, it seems very little time as compared to the time concept associated with the rest of the cosmos or universe. Frightening because of our extreme loneliness. और एक और चीज़ जो कि हमें हॉरिफाई करती है, फ्राइटेंड करती है, खौफजदा कर देती है, वो क्या है? दैट इज़ द फीलिंग ऑफ सॉलिट्यूड, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, दैट इज़ द फीलिंग दैट लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। कि इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ कुर्रा अर्ज़ ही है जहाँ पर ज़िंदगी का ज़हूर मौजूद है। तो ये सेंस ऑफ लोनलीनेस, ये चीज़ हमें फ्राइटेंड कर देती है। एंड बिकॉज ऑफ द लिटिलनेस ऑफ आवर होम इन इट्स स्पेस। और एक और चीज़ जो कि हमें इस कायनात के मुकाबले में खौफजदा या इस कायनात के हवाले से खौफजदा करने का बाइस बनती है, वो क्या है? ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी लिटिल एट कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द हेवनली बॉडीज, रेस्ट ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। यानी हम ये देखते हैं कि human life, it has no value. We come to know about the worthlessness of human life and the world. So all these feelings make us frightened. A millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. और ये दुनिया दर हकीकत में कुर्रा अर्ज़ क्या है? अगेन हमें बताया जा रहा है कि इट इज़ द मिलियन पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड on all the seashores of the world, कि तमाम दुनिया के साहिल समंदर पर मौजूद रेत के ज़र्रात और उनमें से भी एक रेत के ज़र्रे का लाखवां हिस्सा। तो such is the littleness of our planet and the universe. But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign of life like our own exist anywhere in it except on the earth. और एक और चीज़ जो कि हमें हॉरिफाई करने का सबब बनती है वो ये है कि we really do not find the appearance, the emergence of life on any other planet so far or anywhere else in this universe, कि हमें इस पूरी कायनात में ज़िंदगी का ज़हूर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो why is this universe so frightening for us? There are certain reasons behind. Number one, all this include immense distances in space. Number two, the stretches of time, and then we see the feeling of our extreme loneliness. And then again, the littleness of our home as compared to the rest of the universe. And also the feeling that we do not find the emergence of life anywhere else in this universe. So all these things really horrify us. All these things really perturb us. All these things really make us to think about our reality. Indeed, means actually, literally, in fact, for the most part, empty means vacant. Space is so cold that all life in it would be frozen. So what is the state of space? Space किस तरह की है? यानी it is too cold. यानी there is a cold of hundreds of thousands of degrees of frost in space. So that is why nothing can exist over there. Rather, the life would be frozen over there. खला की वुसअतें इस कदर सर्द तरीन है कि वहाँ ज़िंदगी का ज़हूर मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ज़िंदगी वहाँ पर
फ्रोजन हो जाएगी, मुंजमद हो जाएगी, जमकर रह जाएगी. Most of the matter in space is so hot, so to make life on it impossible. Similarly, we see that most of the matter like stars in this universe, all these are really very hot, too hot for life to exist on them. यानी सितारों का जिक्र किया जाए, गर्म मादों का जिक्र किया जाए जो हमें इस कायनात में नज़र आते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पेस, तो ये इस कदर गर्म तरीन है कि इवन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देम, लाइफ वुड बी बर्नट इनसाइड. कि इन गर्म मादों में भी ज़िंदगी का ज़हूर क्यों मुमकिन नहीं है कि ये बॉइलिंग पॉइंट से भी कहीं इंक्रीज टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ ज़िंदगी जो है भस्म हो जाने के ख़तरात हैं. यानी ज़िंदगी यहाँ पर भस्म होकर रह जाएगी, ज़िंदगी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम. यानी वो कायनात जिसने हमारा प्लानिटरी सिस्टम तश्कील दिया, एक प्लानिटरी सिस्टम ज़हूर में आया. लगता है, ऐसा महसूस होता है कि इस प्लैनेट के अलावा पूरी कायनात में ज़िंदगी का कोई किरदार मौजूद नहीं है, ज़िंदगी का कोई ज़हूर जो है वो दिखाई नहीं देता है और शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ सैयारा अर्थ तक महदूद है. What do you mean by planetary system? We discussed about it yesterday. Planetary system mean sun together with all the planets which rotate around it in their specific orbits. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. All right, another thing, another fact which we explored after reading this chapter is that there exist only very few systems in the universe where लाइफ इज़ पॉसिबल. शायद बहुत कम कोई ऐसा प्लानिटरी सिस्टम हो, कोई ऐसा प्लानिट हो, कोई ऐसा सिस्टम हो इस कायनात में, कैलकुलेशंस ये हमें दिखाती हैं जहाँ पर शायद ज़िंदगी का ज़हूर इम्कानात में शामिल हो. येट so far as we can see, life of the kind we know on earth can exist only on the planet like the earth. लेकिन हमारे एहसासात, हमारे महसूसात क्या कहते हैं? We feel that the life, the kind of life which we see on the planet earth can only exist on this planet. इसके reasons क्या हैं? हम ये क्यों महसूस करते हैं कि ज़िंदगी जो है उसका ज़हूर सैयारा ज़मीन जैसे सैयारे पर ही मुमकिन है, बाकी सैयारों पर क्यों मुमकिनात में से ये चीज़ नहीं है? उसकी वजह देखते हैं. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is temperature at which the substance can exist in a liquid state. तो which is the suitable physical condition required for the existence of life. इसमें हमें बहुत वाज़े तौर पर इस नहायत अहम सवाल का जवाब जो है वो दिया जा रहा है कि which are the suitable physical conditions required for the existence or emergence or appearance of life. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि we need a moderate temperature. The basic requirement is the moderate temperature at which the things remain in liquid form. यानी हमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि खला जो है चूँकि ये बहुत कोल्ड है, बहुत सर्द है और वहाँ पर ज़िंदगी जो है फ्रोज़न स्टेट में आ जाएगी, और सितारे चूँकि बहुत गर्म हैं और वहाँ पर ये फायरी बॉल्स की तरह से हैं, कलेक्शन ऑफ फायर की तरह से है, वहाँ पर ज़िंदगी बर्नट अप हो जाएगी. लिहाजा क्या फ़िज़िकल कंडीशन होना चाहिए जिस पे लाइफ जो है उसका अपीयर होना मुमकिन हो सके? इट इज़ द सूटेबल टेम्परेचर एट विच द थिंग्स रिमेन और स्टे इन लिक्विड फॉर्म. हमें एक ऐसे टेम्परेचर की, ऐसे दर्जा हरारत की ज़रूरत है जिस पर चीज़ें लिक्विड फॉर्म में माया हालत में रह सकें, ना तो फ्रोज़न हो और ना ही बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर बर्नट अप हो जाए. ठीक है, और वो सूटेबल टेम्परेचर हमें कहाँ मिल रहा है? प्लैनेट अर्थ पे. The stars themselves are far too hot for this. और सितारे जो हैं जो कि वो बहुत गर्म हैं और life that is why cannot exist on them. We may think of them as a collection of fire scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature right. First of all, we have to define what is a star. Star क्या है? Stars के बारे में बताया जा रहा है कि stars are the collection of fires. Stars are basically the collection of fires, and these stars are scattered throughout or through space, and
what do? They provide warmth in our surroundings, and where the temperature is most some 4 degree above absolute zero, that is about 484 degree of frost on the Fahrenheit scale. और टेम्परेचर क्या है जनाब? टेम्परेचर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट जीरो. Absolute zero means it is the lowest possible temperature. No temperature exists below an absolute zero. It is minus 273.15 degrees Celsius और minus 459.67 Fahrenheit. तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है और जिसके बाद जो है टेम्परेचर जो है वो उसको हम गैस नहीं कर सकते. दैट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. तो कहा गया है कि टेम्परेचर की सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी 4 डिग्री अबव टेम्परेचर है, या फिर इसका फ्रॉस्टिंग पॉइंट बनता है 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट फॉरेन स्केल पर. अब फॉरेनहाइट और सेल्सियस इनसे क्या मुराद है? दीज आर बेसिकली द टेम्परेचर स्केल्स. फाइन. तो लिहाजा यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज़ कोल्डर स्टिल. और जब हम मिल्की वे क्या है? मिल्की वे मीन्स गैलेक्सीज. गैलेक्सीज क्या है? दीज आर द ग्रुप्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स all together with dust and gas and held together with a gravitational attraction. तो मिल्की वे कहकशाओं से दूर देखते हैं तो फिर भी हमें सरतरीन जो है वो माहौल, सरतरीन एटमॉस्फेयर जो है वो दिखाई देता है. अवे फ्रॉम द फायर्स there is an unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. तो हमें यहाँ पर हम इख्तिताम करेंगे लाइंस पे कि हमें क्या चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरती से बताई गई है कि अगर हम सितारों के करीब करीब चलते जाते जाएंगे तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ फायर्स है और वहाँ पर चीज़ें बर्नट अप हो जाएंगी. और जब हम उनसे दूर हटते चले जाएंगे खला की जानिब तो चीज़ें क्या है? फ्रॉस्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ चले जाएंगे. और ये फ्रॉस्टिंग पॉइंट जो है इंतहा दर्जे तक पहुंचा हुआ है कि चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं. और लिक्विड्स क्या है? जैसे हम सितारों के करीब आते हैं तो ऑल लिक्विड्स वुड बॉयल, और जब हम स्पेस की जानिब बढ़ते हैं तो ऑल लिक्विड वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रोजन स्टेट. एक मुंजमद हालत में चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है ना? तो इसलिए स्पेस में और इस हॉट मैटर पर ज़िंदगी का ज़हूर जो है वो मुमकिन नहीं है. बेटा इसको आपने तैयार करना है. वर्ड्स मीनिंग मैंने पढ़ाने के दौरान डिटेल से आपसे डिस्कस किए. इसको देख लीजिएगा, इसको रिवाइज़ कीजिएगा, इसको मेमोराइज़ कीजिएगा, लेसन को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन्स ना रहें, कोई एम्बिग्यूटी ना रहे. वी गॉट मैनी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल थिंग्स टुडे. आज बहुत ही मालूमाती चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉलेज में आई. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर एंड सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर tomorrow inshallah. Till then, Allah Hafiz.